So good evening, ladies and gentlemen. Namaste and a very warm welcome to all of you to the Blub World Web Talks 211th episode. In the last 210 episodes, we have talked to, interacted with more than 3,000 school leaders on this very platform where they've shared their ideas, opinions, innovations, and what all new are they doing in the education space. तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्लब वर्ल्ड वेब टॉक्स के 211वें एपिसोड में। पिछले 210 एपिसोड में हमने करीबन 3000 से ज्यादा शिक्षाविदों से बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो शिक्षा को कैसे बदल रहे हैं और शिक्षा उन्हें कैसे बदल रही है। तो आज के अगले 60 मिनट जो आप हमारे साथ में हैं, वी हैव सम अमेजिंग पीपल विद अस जिनसे हम बातचीत करेंगे ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज इसके मायने, इसके इंटरेस्ट सब लोगों के अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैलेंज है which people face across the education industry. But before we initiate this talk, just some ground rules. So the Blub World Web Talks is a timed platform. So once your speaking time is over, you might get muted. If you get muted, please don't get offended. It's just to keep the activity interesting and crisp for everyone. Secondly, this is a bilingual platform. आप अंग्रेजी या हिंदी में से कोई भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोशिश करें इन्हीं दो में से किसी का इस्तेमाल करें, तीसरी का नहीं, बिकॉज वो समझ नहीं आएगी। भाषा बहुत ज्यादा अंग्रेजी पे स्ट्रेस करना क्रिटिकल नहीं है। विच एवर लैंग्वेज यू कंफर्टेबल इन, यूज दैट लैंग्वेज, बट लेट द आइडिया गो थ्रू। आइडिया अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि भाषा कभी भी ज्ञान का पैमाना नहीं होता। नाउ फॉर योर टाइमिंग, जैसे ही आपको आपकी स्क्रीन पर मैं हाथ उठाता हुआ दिख जाऊं, उसका मतलब यह है कि आपके फाइनल 30 सेकंड शुरू हो चुके हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको मेरा हाथ हवा में दिख रहा है तो उसके अगले 30 सेकंड में आप कंक्लूड कर दें, अन्यथा यू माइट गेट म्यूटेड। So thank you so much everyone for joining us today. Let's start the Blub World Web Talks 211th episode on a very interesting topic, which is handling difficult parents. कि हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर पूरे शिक्षा जगत में होते हैं पेरेंट्स। उनके साथ जब चैलेंजेस हो, डिफिकल्टी होती है, तो कैसे कैसे लोग उसे हैंडल करते हैं, क्या क्या आइडियाज हैं जो कि दूसरे उनसे सीख सकते हैं। एट द स्कूल लेवल, एट द यूनिवर्सिटी लेवल, हर स्तर पर ये चैलेंजेस अलग होते हैं और उसको कैसे कैसे ये स्टेक होल्डर्स, ये एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। लेट मी इनवाइट द फर्स्ट स्पीकर फॉर टुडे टू इनिशिएट द राउंड टेबल। A very warm welcome to Mr. Jitendra Kumar Dixit, who's the Assistant Director for Lovely Professional University in Jalandhar, Punjab. Jitendra ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute yourself and a very warm welcome. Good evening, everyone. Thank you, Mr. Daksh, for sharing this platform with me. Rather, I personally feel today's topic, handling difficult parent, has its own relevance. Be it will be school, college, or a university. On daily basis, we encountered with parents. Some are easy to handle, but some are really difficult to handle. I don't blame parents for their difficult behavior, and we cannot also enter in an argument that who is right and who is wrong. But we should be efficient enough to deal with difficult parents. And in my opinion, rather for that, we may take care of few points. I always tell my team, whenever any parents, they walk into you, always try to greet them first and ask parent to sit and offer a glass of water. The agenda behind this is to settle down the parents, because they might walk in with certain kind of difficulties. They might be having certain grievances. हर पेरेंट्स के अपने अपने grievances हो सकते हैं. So और वो बाहर की प्रॉब्लम से हमारे पास जब आते हैं, तो उनके माइंडसेट को काम डाउन करने के लिए always greet them with a smile and ask them to sit and offer a glass of water. Number 2, take a deep breath, because it is very necessary. Because हमको पता नहीं है जो पेरेंट्स हमारे पास आया है, we don't know how long and which direction this conversation might be. So we really need to take a deep breath before taking this conversation ahead. Number 3, which is very important, try to come into habit of effective listening. I always believe, try to be an effective listener first, without interrupting parents, because parents, they do not like to be interrupted in between when they are saying something, because what I believe, their ego is very high, so they do not like interruption in between. So please remember, we are teachers to their word, not to them. So I believe that try to listen to them very calmly, very patiently, and try to solve their problems. Number 4, which is very important, do not try to be judgmental. What I believe, we cannot give a solution on the spot.
every problem has a solution, but we need to try to understand that we as a teacher always act as a bridge between a parent and the management. Just listen, understand, and set a time period so that you can revert to the parents with solution within that particular time period. Next is very important. It is really very important for us to earn the trust of the parents while in communication. उस पेरेंट्स को बिलीव होना चाहिए कि जिसके सामने वो अपनी समस्या को रख रहा है, ही इज द राइट पर्सन जो उसकी समस्या को भले सॉल्व ना करे लेकिन करेक्ट अथॉरिटीज तक आगे जरूर पहुंचा जाएगा. नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट, और यहाँ पे हम सब लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं दैट इज डू नॉट ओवर कमिट. हमें कभी भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना. हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, उसको टाइम पे पूरा नहीं कर पाते हैं और पेरेंट्स इस चीज को लेके काफी अनॉयड होते हैं. एक चीज मैंने और ऑब्जर्व किया है दक्ष जी, पेरेंट्स डजंट लाइक सरप्राइजेस. अगर बच्चे के परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात है और खासकर अगर उनके पुअर परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात है, तो इंस्टेड ऑफ कि उनको तुरंत बताना और एकदम उनके सामने उस चीज को रख देना, हमको धीरे धीरे जब वो प्रॉब्लम पनप रही होती है तो पेरेंट्स को लूप में लेना शुरू करना चाहिए. एंड लास्ट but not the least, come into habit of maintaining the record of communication. This is very important. Parents are into habit of forgetting the things. हम उन्हें काफी बार बोलते हैं, but हमारी habit होती है कि हम verbally बोलते हैं. Thank you so much, Jitendra ji. The first 3 minutes are over, but we'll try to again come back to you. जो बातें आपने कही, मैं उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कशन में आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ. तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो भी पेरेंट आपसे मिलने आ रहा है, पहले एक ग्लास ऑफ वाटर पिलाइए, शांति से उन्हें बिठाइए, थोड़ा काम डाउन कीजिए, उनकी बात को सुनिए और उनके टीचर बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए. उनके बच्चों के आप टीचर हैं, उनके नहीं है. ओवर कमिट मत कीजिए और कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड रखिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक एक अंडरलाइंग स्टेटमेंट जो सभी जनों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि एज एन इंडिविजुअल टेक ओनर्स ऑफ द चैलेंज, कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी ओनरशिप लीजिए, उसे अपने आप से अलग थलग मत समझिए और उस पेरेंट को एम्पैथेटिकली पूरे इकोसिस्टम में बनाए रखिए. Thank you so much, Anurag ji. Let me invite the next speaker for today. A very warm welcome to Mr. Anurag Sharma, the principal for Ryan Edunation School from Jaipur, Rajasthan. Anurag ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute yourself and a very warm welcome. We should not be prejudiced while interacting with any of the parent, because what happens that many instances we don't respond to a situation, we react to a situation, and it happens 99% of the times because the prejudice that we have. A parent and the parent has a history of a fee default, and a parent is coming to meet. So there may be instances wherein the person may think that it would be about a fee issue only. So we should always avoid prejudices while meeting a parent. We should, as the previous speaker has also said, that we need to listen the parent out first, because then you will get to the depth of the problem that is there. In my experience, what I have observed is that आपके पास तक यदि कोई parent आ रहा है, that means उसको कुछ ना कुछ समस्या तो हुई है. How genuine it is something which you need to find out with time, right? So the first thing that you need to do is, as sir has rightly pointed out, that you need to first of all get to the root of that, and the only way to do that is to first hear out what the parent is saying, right? वो ही एक तरीका, because in most of the cases it is observed कि venting नहीं हो पा रहा है. I mean, they are not getting the right person to reach out to, and that's the reason why it is happening. It is getting built up. So that's how they want to vent out. There may be instances where आप सोचोगे कि we are at such a stature and the parent coming here is not behaving in an appropriate manner. It is not the parent who is behaving in that manner. It is the reaction of probably so many instances which has happened in the past, which is causing him to behave in a certain manner. So उसको tackle करने का सबसे effective तरीका सर ने बताया कि आप parent को बिठाइए, glass of water. In some of the premises you will see these experiments being कि आप जहाँ बैठते हैं, if you'll have a mirror at the back of that, it will serve as a great deterrent for a parent to shout out. Why? Because when you speak to a person, you don't see your own image. Or what happens is when you are seeing your own image, then you realize that how you are speaking. So what it sets a tone for the entire conversation, and the parent starts speaking the problem rather than sir, just give me 30 more seconds. So this is the first thing that I want to highlight is don't be prejudiced, hear the parent out. And also for solutions,
rather than giving immediate solutions, because you will have to also dwell into the problem and find out more about it. So set timeline, set realistic timeline. Don't give an instant solution to that, because most of the times it is not possible, right? So, sir, over to you. Thank you so much, Anurag ji. And I think दो बहुत important ideas जिसको आपने पूरे discussion में that you brought them very nicely. The first one being, don't be prejudiced. आप अपनी समझ का baggage लेके मत जाइए उस discussion में जो आप करने जा रहे हैं. पूर्वाग्रहों से ग्रस्त मत होइए. Don't be prejudiced. Think of it as a plain slate. जो भी discussion है उसको point zero से शुरू करिए और समझने का प्रयास कीजिए. And I think दूसरा जो कि बहुत अच्छा idea है, I would suggest, which is a very good psychological deterrent, कि आप कभी भी खराब सिचुएशन में ना फंसे, कि अपने पीछे एक बड़ा सा कांच लगाएं और जो सामने डिस्कशन करने आया है उसे खुद का चेहरा दिखता रहे उस कॉन्फ्रंटेशन में, क्योंकि अगर वो खुद अपने आप को खराब दिखेगा तो वो डिस्कशन को अच्छा करने की कोशिश करेगा. So it's a very good idea which can be implemented across schools. So thank you so much, Anurag ji. Let me invite the next speaker for today to add their perspective to the discussion. A very warm welcome to Mr. Balraj Singh, the principal of JPF Academy from Nising, Karnal, Haryana. Balraj ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute yourself and a very warm welcome. Good evening, all of you. As my experience as a principal, along with as a teacher, I really find very less parents that I face the problems with them. I find that when a parent approaches to school, he comes for most of the time 3 or 4 reasons with a complaint. The first one is that may he comes to school with a problem of a child. May he comes with a complaint in the school, like facilities, maybe that he comes to school with a problem that handling of the child with the teacher. May he comes with the behavior of the child in school. So I think even like every parent doesn't come to school. There are few, there may be maybe according to me, maybe I'm wrong here, 30-40 parents are very active and they just come with certain issues that we have this and this problem. So I believe that connectivity with the parent, may it is, they are difficult in handling, and also I believe personally, more and more interaction with the parents will, help growing the school. So I believe in listening them, whatever the kind of person is there, and listen very, very carefully. And in my own school, there are 1600 students, and I try to, connect each and everyone. Even on the PTM days, I keep standing outside. If the may 50-60 people come to my office, I keep standing and meet more people. I really don't hesitate talking to them during the day also. So I'm so free to talk to them. And really, when they feel that the way I work and the sense of, understanding with the parent and caring of the child, so really very less percentage of people I face like their difficulty and all. So not much of the problems I'm really facing in case of the difficult parents. When they understand your vision and mission is clear, so they, go accordingly, and really not much of the problems, Daksh. Thank you. Thank you so much, Balraj ji. I think 2-3 बड़े important points जो आपने ऐड किए. सबसे पहले पेरेंट को सुनते रहिए, उनके साथ कॉन्वर्जेशन अपना बनाए रखिए, and whenever you get an opportunity to be in front of them, whichever form of interaction it is, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज, आपका विजन, आपका काम करने का तरीका पेरेंट्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है. And I think a very important point is, don't keep surprises for them. Make it easily accessible. Let them know the story. Let them be a part of the story. So thank you so much, Balraj ji. Let me invite the next speaker for today. A very warm welcome to Mrs. Bhawna Chaudhary, the principal of Sine International School from Jaipur, Rajasthan. Bhawna ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute yourself and a very warm welcome. हेलो एवरीवन. सो बहुत सारे हमें व्यूज मिले कि किस तरीके से डील करना चाहिए, बट आई पर्सनली बिलीव कि हमें ट्रस्ट क्रिएट करना होता है रिलेशनशिप में. जब तक हम उन पेरेंट्स में ट्रस्ट नहीं क्रिएट करेंगे, उनमें हम फेथ नहीं जगाएंगे कि आप अपने बच्चे को सही जगह भेज रहे हैं या सही हाथों में दे रहे हैं, तब तक वो फंसी ही बिहेव करेंगे. उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम नहीं इंस्टेंट नहीं दे सकते, लेकिन हम टाइम ले सकते हैं उनसे और उन्हें ट्रस्ट दिला सकते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो हम समझ रहे हैं. एक एम्पैथी हम क्रिएट कर सकते हैं. हम उन्हें अपनी जगह इमेजिन करने को भी कह सकते हैं और हम उनकी जगह भी खुद को रखकर सोच सकते हैं कि जो उनका प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है या नहीं है. इनके समटाइम हमारे पास ऐसा होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, या हम पेरेंट को नहीं समझ पाते कि इनका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है.
बिकॉज टीचर्स सब अपना वर्क प्रॉपर कर रहे हैं, हमारा मिशन क्लियर है, हमारे मेथड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे या हम कहीं मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं पेरेंट्स को, तो उस केस में हमें पेरेंट्स से ही सजेशन लेना चाहिए. इट मे बी कि वो उनके पास बेटर सजेशन हो हमारे लिए. लाइक नो वन इज परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं है, हम अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, और सीखने के लिए कोई एज नहीं होती और कोई पर्सन नहीं होता. मे बी हम पेरेंट्स से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. तो एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन हमारे बीच में होना चाहिए, और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है या वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर वे में डिस्कस करना चाहिए. एक मेरा पर्सनल बिलीव है कि मैं जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए टीचर्स को मतलब पेरेंट्स के सामने नहीं डालना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स टीचर का उतना रेस्पेक्ट नहीं करेंगे जितना वो एक प्रिंसिपल का करेंगे. वो उनसे मिसबिहेव भी कर सकते हैं, और टीचर्स भी बाउंड होते हैं कहीं ना कहीं आंसर नहीं देने के लिए. इसलिए जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है या जो भी उनका इशू है, आपको लगता है रियली में वो टीचर ने फॉल्ट है, टीचर का फॉल्ट है, या टीचर ने रियली में ऐसा किया होगा, अगर आपको बिलीव है कि आपके टीचर ने कुछ ऐसा किया है, या जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, टीचर और पेरेंट्स को आमने सामने मत कीजिए, बिकॉज ये एक क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट करेंगे आप खुद के लिए. तो इस चीज के लिए मैं एक पर्सनली वो रखती हूँ, मीटिंग आवर्स रखती हूँ कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप आइए, पर्सनली मुझसे डील कीजिए. और पेरेंट्स अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कई बार उनके जॉब इश्यूज रहते हैं, उनके फैमिली इश्यूज रहते हैं, वो आके सारी फ्रस्ट्रेशन हम लोगों के साथ इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंस हैं वो नहीं चाहते वो उनके बच्चों के साथ हो, जो उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किया किसी भी रीजन से. वो अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं. अगर उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है तो उन्हें लगता है कि उसका सॉल्यूशन होना चाहिए. और हमारे जो टीचर्स हैं, जो आजकल की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, रिसोर्सेज जो बहुत हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, उसका यूज मैक्सिमम बच्चों को मिलना चाहिए. पेरेंट्स का इतना ही एक्सपेक्टेशन होता है. और बीइंग अ पेरेंट्स, मैं भी एक टीचर के तौर पे भी समझती हूँ और पेरेंट्स के तौर पे भी समझती हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशन भी हैं. ऐसा थैंक यू सो मच भावना जी. द फर्स्ट 3 minutes were over, but we'll try to come back to you. जो आपने बातें कही उसमें आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच यू ब्रॉट टू द डिस्कशन इज डोंट पुट द सोल्जर अप फ्रंट. आप टीचर को पेरेंट्स से सीधे सीधे आमना सामना करने मत रख दीजिए. कीप अ फिल्टर इन बिटवीन. आप शायद हैं ही उसी लिए कि आप उस प्रेशर को सेव ऑफ कर पाएंगे और लोगों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट स्कूल में बनाए रख पाएंगे. तो एज अ लीडर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि एट द फ्रंट एंड यू हैव टू फाइट बीइंग इन द फ्रंट. आप अपने सोल्जर को धक्का नहीं दे सकते कि आप फुट सोल्जर हैं, जाइए इस झगड़े को सेटल कीजिए. ऐसा मत कीजिए. टेक दी ओनर्स एज अ लीडर. You are the one who has to lead by example. Create an ecosystem where it's comfortable for the teachers and it's convenient for the parent. पेरेंट को सुनते रहिए, उसे बातचीत में रखिए, रिस्पॉन्सिबल जवाब दीजिए एंड खुद उस पूरे कम्युनिकेशन से इन्फॉर्म्ड रहिए. तो थैंक यू सो मच भावना जी. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पीकर. अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर हरि नारायण चतुर्वेदी, प्रिंसिपल ऑफ शांति पब्लिक स्कूल फ्रॉम नगरिया, इटावा, उत्तर प्रदेश. हरि नारायण जी, over to you. Please unmute yourself and a very warm welcome. Thank you, sir. I believe that there are parents who are problem parents, and the parents which we feel are problem, they are more concerned about their children. That is the better part of the parents who are sometimes feel that they are problematic parents. For that, I believe, and when I was in St. Paul's Church College, Agra, for 36 years, and then I have come here. I believe that whenever there are problematic problem or any kind of complaint, immediately we need to call in person or through somebody who is not involved with the problem. Like जो हमारा टीचर का कंप्लेंट करना चाहते हैं और whatever school problems they feel, उससे डिफरेंट किसी पर्सन के थ्रू कांटेक्ट करके इमीडिएटली मिलना चाहिए पेरेंट्स से. And we should give the time to for the parents to tell whatever they have in their mind. After listening the problem, we need to discuss about any kind of suggestion, which is my experience, that sir, what can we do other than this? We need to write, we need to note down, we need to give the importance to the person who have come.
after some time, when the parent feels that he is a part of the institution, then we can call the teacher also sometimes and sit together and discuss what can you do. Please note down, these are the things, they should be happen this way, whatever they want. I mean to say, psychologically, the parent must feel that I am entertained very well, and next time the problem will not be there. And we can request the parent time to time, any problem do you have, sir? I think the parent becomes the friend of the school, parent goes with the school. Very simple technique is a psychological problem. Sometimes some have temperament of different kind, that they should be listened, they should be entertained immediately. This kind of problem we have number of parents who used to have their own way of doing. So we had solved so many problems. I think we can go with the parent, and we must feel the parent, that parent is being entertained, and school has admitted the problem if there is, and promise that that kind of problem we won't repeat. Thank you so much, sir. I think एक बहुत important element ये है, let the person in front of you feel important. आप you attitude रखिए, उन्हें पूरी इज्जत दीजिए, उनके सामने ये establish आपको करना होगा किसी भी तरीके से कि that the problem has been heard and the solution is being worked upon. Whenever you interact with a parent, talk about the solution, not a lot about the problem. And once you get a solution, put the right people in place so that the right kind of discussion starts. So thank you so much, Narayan ji. Let me invite the next speaker for today. A very warm welcome to Dr. Jyoti Gupta, the principal of Sardar Patel Public School from Jaipur, Rajasthan. Jyoti ma'am, over to you for the next 3 minutes. Please unmute yourself and a very warm welcome. Good evening and welcome you all. This is Dr. Jyoti Gupta, principal Sardar Patel Public School, Jaipur. This topic is very, very important for all stakeholders. And thank you, Blub World Web Talks. You have given me opportunity to express my view on this topic as a speaker. Some strategy we have to make in dealing with difficult parents, like we need to be good listener. I'm totally agree with Jitendra sir. I feel doing that help makes the parents feel respected, and it communicates that we are willing to listen and try to find a solution to whatever their problem is. And second, teachers should share all the problems related to parents to principal, and principal should handle the situation with care. And really, I'm agree to Bhawna ma'am कि teachers को direct parents के सामने हमें नहीं ले आना चाहिए. One instance I want to discuss with you कि एक parent से वो हमेशा shout करते थे teachers पे telephonic conversation से. During fees deposition, he came to my school और मैंने बहुत ही अच्छे से उनको greet किया, बुलाया और वो start कर दिया उन्होंने shouting. मैंने बहुत ही calmly उनको सुना और फिर उन्होंने कहा कि मैम ऐसा है आप तो TC दे दो. मैंने बहुत calmly उनको सुना और उसके बाद उनको बोला कि ठीक है sir, just you have to write application and within 7 days I'll give you. टीचर्स हमारी आपके बच्चों, आपका जो बच्चा है उससे प्यार करती हैं, उससे कंसर्न रखती हैं, आपको इन्फॉर्म करती हैं और आप उन पे हमेशा शाउट करते हैं. द रीजन कि मुझे पता था कि वो हर बार क्या करते थे, इस वजह से मैं उनको ये कह पाई और विद इन 2-3 मिनट्स वो वापस मेरे पास आए और उन्होंने सॉरी फील किया और कहा कि मैम एक्चुअली आई एम फ्रस्ट्रेटेड टू माय पर्सनल प्रॉब्लम. और फिर उन्होंने वो सारी चीजें मेरे से डिस्कस की और फिर उसके बाद से वो कभी भी टीचर्स पे वो उन्होंने शाउट नहीं किया. तो बहुत जरूरी है कि आपको टीचर्स के थ्रू सारी चीजें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज टू एस्टैब्लिश कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप with the student as well as the parents. We can build a comfortable zone with the parents where we can freely discuss students' problem without any hesitation. It's important to be mentally prepared to face any situation with patience, politeness, and professionalism. Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity. Thank you so much, Jyoti ma'am. And I think a very nice example that you have given, ki when a parent typically has an attitude of shouting, how do you let them be a part of the story and how he or she opens up
within the ecosystem, वो आपसे बात करने को भी राजी हो जाते हैं. The only thing that you must be able to provide a comfortable environment where they're able to open up, talk to you, and you are also in a position to be empathetic towards them. अगर वो आप पे विश्वास या ट्रस्ट करने की स्थिति में है, तो that is where the success of a leader or a principal really comes in. कि आपने उस तरीके का एटमॉस्फेयर अपने आसपास बना रखा है. So thank you so much, ma'am. Let me invite the next speaker for today. A very warm welcome to Mrs. Rekha Kumar, the principal for Sandur Residential School from Sandur, Bellary, Karnataka. Rekha, ma'am, over to you for the next 3 minutes and a very warm welcome. A very good evening to one and all present here. And first of all, I would like to thank Blub Web Talks, World Talks, for giving me an opportunity to join the session and speak about the difficult parents. First of all, I would love to say that I would take the notion of using the word difficult parents, because nobody is difficult as a person, but it is a situation or the circumstance which makes it difficult. Because we as a leaders come across so many situations through the parents. It can be due to the fee structure or the fees payment. It can be regarding the injuries, the teenage issues, or the domestic issues, or a single parent issues. So now we as a leaders should be very, very calm and try to understand the situation rather than having a preoccupied or the judgmental view of a parent. Because once we understand a parent is difficult and we start thinking that the difficult parent is coming in or the difficult parent is going to talk today, we will be judgmental and we will always think that, oh, this parent is again going to create an issue. So the first and the foremost duty of a leader is to take out the negativity from our own minds and then getting into the next steps. Like all the leaders told that, we keep doing many strategies, following many tricks to handle the parents. But however, I have been following some of the very creative ideas wherein I have been involving the parents, especially section by section. Like for example, workshop for the mothers and even workshop for the fathers separately. So this idea gives them, it keeps them the icebreakers and build a very good rapport so that we understand them closely. And when the parents understand that the school is actually interested in the success of a student and the safety of their ward, what else we need? They would never come with a negative notion. Even if they come, as other leader told us, let us take a deep breath, keep calm, welcome them with a glad smile, even if they have come with difficult words. I think these are some of the things we should be actually giving it to the parents, especially the mothers, because the mothers get into the huge tensed mood when they come across their children's even small mistake, which is overlooked by the teachers or the school. So the most important thing which I noticed here is make them understand through these workshops by calling the achievers, the great educationists or the scholars who would certainly help the school and to make the parents understand what exactly the school stands for. Thank you. Thank you so much, ma'am. I think one more perspective to handling difficult parents is that let's start educating the parents. Put up workshops for them, put up activities for them, plan an engagement for the parent as well. जिस तरीके से बच्चों का आप एक करिकुलम प्लान कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी एक इंटरेक्शन करिकुलम प्लान कीजिए जहां पे आप उन्हें अलग अलग समय पर हाउ कैन यू एंगेज देम मीनिंगफुली सो दैट दे आल्सो अपग्रेड एज पेरेंट्स and they also understand the school ecosystem a little better. Let me invite the next speaker for today. A very warm welcome to Mrs. Divya Wakhale, the principal for Dr. Soni Lal Patel Senior Secondary School from Kanpur, UP. Divya ma'am, over to you for the next 3 minutes. Please unmute yourself. I wish I'm to everybody is back from work and still into the problematic parents. I want to as leaders from my side that we take times throughout after school also we want Daksh to sit and discuss it. Problematic or problem something is like I don't believe on this word. Like if I call it something problematic, तो negativity डाल देता है. So tendency, I have my personality, or you can say I believe in doing things, getting into it, and then after finishing the task, then I start re-evaluating it. That one was a challenge, it was a problem, or something like that. हमारे अपने जो साम है
जो हम लोगों ने स्कूल्स में डिवोट किए हैं, सालों साल से हम लोग एजुकेशन सिस्टम में हैं, जिसके बाद एक्सपीरियंस है अपना सामने हम देख हैं कि अब तो कुछ ऐसा लगता है जो प्रॉब्लमेटिक हो। और प्रॉब्लमेटिक उस वक्त इसलिए नहीं था क्योंकि कभी किसी चैलेंज को अगर आप इस तरह से लोगे ना कि ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम ही लगेगा, हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे या उसको कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जब से इस सेशन की तैयारी मैंने की, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लमेटिक और प्रॉब्लम पे फोकस किया। प्रॉब्लमेटिक एंड प्रॉब्लम एंड मुझे अच्छा सोल्यूशन मिला उसकी मीनिंग में, that it says that problem is a question that you have to solve by thinking about it. So when I am a student who is not in a good mood, not ready to listen, not ready to agree to what I am trying to say, I have some time and myself also sometime. When my team, we research, we work on it, and when the final when we have a meeting, then positively, yes, the problems are resolved. But the thing that I have done, in my school is that I have trained my staff. I have trained my office staff, I have trained my teachers, and we keep on discussing on these topics. Teachers don't teach in the class. They do not have any as such exposure to problems or problematic parents. It is basically the front office which deals with it. So I keep discussing things with my front office. I keep telling my people there in the office and the staff, the teaching staff, who gets the solution and things are in their mind, so that whenever we get into a problem, they are able to resolve it. Thank you. Thank you so much, Divya man. I think आपने जो पर्सपेक्टिव ऐड किया, which is positive benchmarking, की चीज में नेगेटिविटी या पेरेंट का वो कैटेगराइजेशन देखिए ही मत, स्टे प्रैक्टिकल, रीइवैल्यूएट करते रहिए, प्रेजुडिस से बाहर आ जाइए, एंड किसी भी कॉन्वर्जेशन को कीप इट अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन. Try to understand what's going on, be a little more empathetic, and even if you feel कि कोई एक पेरेंट या टिपिकली एक स्टेक होल्डर एकदम प्रॉब्लमेटिक कैटेगरी में आ भी गया है, तब भी कंटिन्यूअसली रीइवैल्यूएट दैट डिसीजन, क्योंकि किसी भी दिन इंप्रूवमेंट आ सकता है, चेंज हो सकता है. So thank you so much, ma'am. So we have listened to all the speakers for once. हमने सबके ओपनिंग थॉट्स सुन लिए. So now is the time for an open floor. कि अगर आप म्यूट कर दिए गए थे, कोई ऐसी चीज थी जो आप ऐड करना चाह रहे हैं डिस्कशन में, कुछ ऐसा है जो आपने सोचा था लेकिन बोल नहीं पाए, so this is the time when you can unmute yourself and speak it out loud. It's an open floor. तो आप में से जो भी कोई contribute करना चाहता है, just raise your hand or unmute yourself and you can speak it out loud. तो ये अगला समय is for an open willing discussion. कोई भी ऐसी चीज जो आपको लग रहा है आप ऐड करना चाहें, बोल सकते हैं. One thing that was left, since beginning we have to be very careful that very frequently we are calling parents meeting. Out of calling parents meeting or out of the experience of the teacher with the parents, if we find any of the parents little different, we will not say difficult. Since beginning we should call them in the functions of the school or any important occasions, so that we are very close, and after getting too close, I think they will not be the problem for the school. This is what it was left. Thank you. Absolutely. स्कूल से क्लोजनेस बनाए रखें ताकि आप भी उनका एटीट्यूड समझे, वो भी आपका एटीट्यूड समझते रहे. अनुराग जी, ओवर टू यू. यू वांटेड टू ऐड समथिंग. Yeah, sir. Basically, I wanted to add that हम लोग टॉपिक पे कभी-कभी थोड़ा सा डिबेट हो रहे हैं, because topic is how to handle a difficult parent. That means the discussion here is there is no denial of the fact that parents are our allies, and there are a lot of things that we can do and we can build a relationship and trust and all. The fact is that we are talking about those situations where we are handling a parent who is termed as a difficult parent, right? And difficulty does not necessarily mean कि parent आपके पास complaint करने आ ही रहा. Sometimes difficult parents are those parents also who are not coming to you at all, and you want to meet them. I mean, there are instances wherein your counselor tells you that there is an underlying problem in a family of this child, and it is very important that you meet the parent of this child, and the parent is unapproachable. I mean, आप कोशिश कर रहे हैं उस parent से मिलने की, वो भी एक difficult parent है आपके लिए. So you will have to reach out to people also. So one thing that was missed out is that while you become non-prejudiced, you build a culture of respect, you build a culture of trust. It is also important to reach out in certain cases, because there are parents who are difficult because of the unresponsiveness that they show in the system. So you'll have to reach out to them if they are not reaching out to you. So it's like somebody has said that it is important to have a clear conversation and have this conversation going on continuously with the parents.
conduct workshops or engagement activity with the parents. But there are parents who are continuously absent from engagement activities, or for that matter, any kind of communication that a school has with the parents. So you have to reach out to them. I mean, you'll have to maybe sometimes go out of the way to devise ways and means in which you approach them and you bring them back into the system, because you are bound to have unresponsive parents also. Absolutely. I think एक important point था जो काफी बार मतलब पूरे discussion में discuss नहीं हुआ कि there is absenteeism in parents. बहुत सारे ऐसे parents हैं जो communication से भी बाहर रहेंगे, ecosystem से भी बाहर रहेंगे, तो उनके लिए you'll have to build mechanisms which are more proactive कि आप उन तक बार बार कैसे पहुंच सकें और अपनी बात कैसे पहुंचा सकें. I think Bhawna ma'am wants to add something. Ma'am, over to you. यस सर एक्चुअली इस तरीके के सेशंस ना होते रहने चाहिए जिससे हमें सबके एक्सपीरियंस पता चलते हैं और सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हमें इन पेरेंट्स को टेकल करना चाहिए. तो आपके लिए थैंक यू कि हमने काफी सारी नई चीजें सीखी. तो अब जो नए हमारे पास डिफिकल्ट पेरेंट्स आएंगे हम उनको उसी तरीके से टेकल करेंगे. तो इस तरीके के सेशंस होते रहने चाहिए इस टॉपिक. थैंक यू सो मच मैम. एक्चुअली ब्लब वर्ल्ड वेब टॉक्स का जेनेसिस ही इसी कारण से था कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर की जाएं, बिकॉज हमें एक चीज रियलाइज हुई कि आइडियाज की डेमोक्रेसी होना चाहिए, नए सोल्यूशंस की लोकतंत्र होना चाहिए कि हर किसी के पास पहुंचे, क्योंकि आइडिया और ज्ञान ये किसी की मिल्कियत नहीं होते, ये हर एक के साथ बढ़ते जाते हैं और उसे बांटते रहना चाहिए. जितेंद्र जी, ओवर टू यू. वांट टू ऐड समथिंग प्लीज. थैंक यू सो मच दक्षी. वन थिंग जो मुझे लगता है हम सब लोग फेस करते होंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आजकल एजुकेशन इंडस्ट्री को पेरेंट सर्विस इंडस्ट्री के तौर पे नहीं लेते हैं जैसे बाकी अदर इंडस्ट्रीज हैं. दे कंसिडर इट एज अ प्रोडक्ट, मतलब they are paying fee, and whether it is in university or school, they say ki schools and colleges or universities are bound to give them a best to best services, but they really need to understand that somehow this industry doesn't work like other industry. So sometimes I think teachers also need to understand that we need to facilitate parents, but within the organizational policy, because sometimes we need to be strict as well. Because what we believe in our university also, when we receive the refund cases, obviously students, they come for the enrollment, and some of the students they drop also due to several reasons, but parents expect that we help them by going beyond organizational policy. But at that time we need to tell them very strictly that organizations policies are really at top priority. We are there to facilitate them, but if you revert within a time limit, then we are there. So I think sometimes giving more liberty also, it itself creates a difficult parent. Thank you so much. Absolutely. Going beyond the system, कि जब आप बहुत बार पूरे इकोसिस्टम में पेरेंट आ गया है तो आपको ये रियलाइजेशन उसे कराना होगा ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम that yes, there are some things that we'll have to follow. And एक चैलेंज जो आपने बहुत सही कहा and which is very critical is कि पेरेंट जो है किसी एजुकेशन इंडस्ट्री को भी एक सर्विस इंडस्ट्री के जैसे ट्रीट करता है, एंड उसकी एक्सपेक्टेशन बड़ी क्लियर होती है कि आई पेड फॉर समथिंग एंड आई वांट द सर्विस फॉर द प्रोडक्ट. लेकिन शिक्षा थोड़ी अलग तरीके से काम करती है, एंड आई थिंक दैट्स वेयर व्हेन वी टॉक टिपिकली ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप उसके लिए बहुत अच्छा है, बट आई एम सैड टू से कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप तरीके से काम नहीं करता. इंडिया में शिक्षा इज मैंडेटरीली अ नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी, बट दैट्स द मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी दैट द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया डज. तो हमें समझना होगा कि उसमें से कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव को जैसे ही हम निकालेंगे या हटाएंगे, I think that consideration from the parents end will also change. I think Rekha ma'am wanted to add something. Ma'am, over to you. Yes, sir. As Mr. Sharma sir told, I agree that there should be a lot of time given to the parents that reach out, like what he's told about reaching out to the parents. I would certainly agree to that. And for this, we also have in our school something called as open door policy, wherein the schools or the principal's door is always open in a scheduled time for the parents. So the parents can always come and meet the teachers as well as the principal at the scheduled time, so that each and every solutions are given to them in a regular basis, so that difficult parents would get calm in between before they come to us with a big issue. Absolutely. A open door policy will always be helpful in taking things ahead, and they'll take it far long. I think आज के पूरे डिस्कशन में बहुत सारे अच्छे आइडियाज हम सबके पास में आ गए. एक बहुत अच्छा आइडिया जो आई थिंक आई
want to repeat, and I think it comes from Anurag ji, that let's put a mirror behind us, that जो भी आपसे discussion करने आ रहा है उसे अपना चेहरा दिखता रहे पूरे discussion के दौरान. So before this call comes to an end, Blub World Web Talks had a simple idea that let's create a repository of ideas जिससे सब जने collaterally improve हो सकें. But when we worked, or when we started our work, the idea behind the publication, behind the organization was pretty simple. हमने कहा हम दुनिया जहान के बच्चों को बहुत सारी चीजें पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो सब पढ़ाने के लिए हम उनके पास बहुत पुरानी पुरानी कहानियां ले जाते हैं. Because stories work best when you want to teach something. And that's where Blub World was actually born. We do a very simple thing. Every month, we try to find teenagers who are doing amazingly well in life and share their stories with many more teens across the world. हर महीने हम ऐसे दुनिया जहान में टीनेजर्स ढूंढते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं एंड उनकी स्टोरीज बहुत सारे टीनेजर्स के साथ शेयर करते हैं. अभी से 2 साल पहले वी स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ टीनेजर्स, जिसमें हर साल दुनिया भर से 100 बच्चे इलेक्ट होते हैं एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड दे वर्क ऑन सोशल इश्यूज. वी एट द वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट train them, mentor them, and fund them so that they can work to improve the world. And the best part in this is that nobody pays anything to the World Teen Parliament. It's an absolutely free initiative supported by the Blub World Foundation, where we give it back to the teenagers. So right now, for the second World Teen Parliament, the voting is going on. So if you have time, go on our platform, click on this Vote Now button, and देखिए दुनिया भर के बच्चों ने किस किस तरीके के solutions दिए हैं, और जो बच्चा आपको लगे कि दुनिया का नेक्स्ट लीडर हो सकता है उसके लिए वोट कीजिए. So thank you so much everyone for being a part of the Blub World Web Talks. This was the 211th episode. I hope you enjoyed. If you did, and if you want to attend the future sessions, open your audio and say a big yes. And thank you so much for being here with us. Namaste.